Hi everyone. Today's three important questions I'm going to solve now. So आप लोग ध्यान से देखिए and just try to see how questions appear in your UPSC prelims examination. Okay? 2025 की तैयारी कीजिए गोल्ड टाइट के साथ and you can see the change. Now, the very first question for today is the under Article 356 of the Indian Constitution, President may by proclamation assume to himself. अच्छा, टू ये कह रहे हैं अंडर आर्टिकल 356 राइट द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम द आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल राइट. तो क्या क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास खुद को एज्यूम, क्या क्या वो पावर्स खुद को ले लेने का, मतलब सारे पावर्स को अपने अंडर ले लेने का राइट. तो उनके पास क्या क्या पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. Okay, now as per the article, under article 356, it simply means as per the constitution, because we are asking article 356 and 356 is the part of the constitution. ठीक है. अब आप देखो कि ये चार powers हैं, whatever the functions. Okay, the first is the function of state government will be taken by the president, the power of governor also, the power of the state human rights commission also, and the power of the high court also. After 356 is proclaimed, ये चारों चीज प्रेसिडेंट अपने ऊपर ले सकते हैं. Okay, now question is very clear now. Now if you see the answer to this question is B. Okay, the answer to this question is B, that is 1, 2 and 3, and the fourth option is incorrect, that is called the power of the high court. समझ में आया? Now if you see this power of the high court, ये क्यों गलत है, I will show you. Now in the article 356, okay, those who attended the Abhyas session, you will be never doing this wrong, because I have covered such questions in the Abhyas session where I am teaching you how exceptionally the questions appear in your prelims. So that's why you should not do wrong here. Okay, other students you see here. Now under article 356 if you see here, क्या लिखा हुआ है आप देखो, president may by proclamation, okay, assume to himself all or any of the functions of the government of the state. पहला सही. Okay, second, and all or any of the powers vested in or the accessible by the governor. आप देखो द पावर ऑफ द गवर्नर. ओके, और एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट अदर देन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. कोई भी अथॉरिटी अदर देन द लेजिस्लेचर, मतलब दोज हु प्रिपेयर द लॉ, दैट इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर. अब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन डजंट प्रिपेयर द लॉ, सो ये अथॉरिटी है इन द स्टेट अदर देन द, दिस ऑल्सो पावर कैन बी टेकन. ओके, and the power of the high court, if you see here what it says, provided that nothing in this clause shall authorize the president to assume to himself any of the powers vested in or exercisable by the high court. देख रहे हो आप? तो it's the wrong one. 1, 2 and 3 are correct. Clear? कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. नाउ अब सपोज यू हैव नॉट रेड दिस आर्टिकल वेरी विथ सो मच क्लैरिटी एज आई टॉट यू नाउ, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. ओके, तो मेक श्योर यू लर्न हियर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. नाउ दिस वाज रिसेंटली न्यूज बिकॉज इट वाज फॉर्म्ड अर्लियर, बट फॉर्मली इट वाज रेटिफाइड बाय इंडिया नाउ currently. Okay, formally it was ratified by India currently, and along with the India 4 other countries have also ratified it. So now it will enforced, right? जो requirement इसकी पूरी करते ही it will get into the enforcement. अब देखो इंडिया recently has ratified the Big Cat Alliance Framework Agreement. Okay, ये current affairs based हो गया. Now the countries that do not have big cats can also join the alliance. So this question is something very different थोड़ा. अब alliance में जिनके पास cat ही नहीं है, they should not participate. But alliance का guideline क्या है? We will see. The International Big Cat Alliance Secretariat is headquartered in India. It is international, मतलब बाकी countries भी हैं.
एंड सेक्रेटेरिएट जहाँ पे इट्स लाइक मोर इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो, एंड सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया दैट हैज सम गुड रेलेवेंस, राइट. उसका एक अलग रेलेवेंस है, राइट. इंडिया में सेक्रेटेरिएट है इसका, राइट. सो इफ यू सी द सोल्यूशन हियर, इट्स टेकन फ्रॉम द PIB. आप देखो यहाँ पे, so 4 other countries which have also joined are the 4 countries have joined the India. It's Nicaragua and the Swatini and the Somalia. So आप देखो यहाँ पे, now if you see here that Union Cabinet Chair by the Prime Minister approved the proposal to Big Cat Alliance. Okay. Now Project Tiger कब launch हुआ था? Sorry, 50 years on 2023 हो चुका है. Now, if one statement I want to point out here, that 7 big cats are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So out of this, okay, you see here only this much are found in India. तो यहाँ पे जो Puma and Jaguar है, Puma and Jaguar, these two are not found in India. So आप थोड़ा ध्यान रखोगे, right? All UN members, you see here, all UN members are eligible to become the member of IBCA. जो हमारा second statement था कि डू नॉट, ये गलत है. ओके. एंड थर्ड स्टेटमेंट, सेक्रेटेरिएट कहां पर इसका? यू सी हियर इट्स इन इंडिया. द सेक्रेटेरिएट इज इन इंडिया. ओके. सो इफ यू यहां पे ये सही है, सेकेंड इज इनकरेक्ट. द फर्स्ट एंड 3, 1 and 3, इसका आंसर क्या दे रखा है? डी, 1, 2 and 3 do not have the big cats can also. Okay, I'm really sorry. Like this, if you see here, what exactly they do not have big cat can also join alliance. I thought do not join alliance. ठीक है. तो आप देख लो यहाँ पे, ये correct statement. Sorry, this is correct statement. They can join, the all UN members can join. India में secretariat है. India has recently ratified. I think it's not everything is clear. No need to worry. Now the third last question for today is about the FATF. Again, it was in news. Why it was in news? Because in the evaluation report, okay, in the evaluation report, it has placed India in the regular follow-up category. तो आपको today, you first of all, FATF was established by G7. It's correct or incorrect, you have to find. Second is, it was established to examine and develop measures to combat terrorist financing. Now you see, there is a twist in this question here, that it was established. It was established. So when it was established, we have to see that moment. So that time when it was established to examine and develop measures to combat terrorist financing. Okay. And third is, it has recently placed India in the regular follow-up. तो अब आप solution में जब जाओगे, if you see it was latest news and you see here that it was recently placed in the follow-up category, is the highest rating. रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में जो FATF ने इंडिया को प्लेस किया हुआ है, दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी. एंड इफ यू सी हियर दैट वेरी फ्यू कंट्रीज आर प्लेस्ड हियर. ओके. अगर आप यहाँ पे देखोगे इन द सॉल्यूशन, UK, फ्रांस एंड इटली आर द ओनली अदर G20 कंट्रीज दैट हैव बीन प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी. ओके. अब आप देखो यहाँ पे, नाउ द थिंग स्टार्ट. सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग, not the terrorist. Okay. Then later it was added. The finance action was established in 1989 by G7. The first statement is correct. To combat the money laundering. It originally included the G7 countries, European Commission and 8 other countries. अब आप देखो यहाँ पे, in 2001 the FATF expanded its mandate to combat terrorist financing also. So when it was established, the terrorist financing was not there. Okay. तो आपका जो ये सॉरी आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये गलत हो जाएगा. बिकॉज व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, आप पकड़ो क्वेश्चंस को. ओके. जस्ट ट्राई टू कैच द वाइब ऑफ द क्वेश्चन कि क्या आपको गलत कराना चाह रहा है. व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज नॉट हियर. सो दिस इज G7 इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट. ओके. क्लियर. फॉलो अप कैटेगरी दिस एंड दैट. So it is in the first mutual evaluation was done in 2010. So this also is very important and recently this was in news. समझ में आ गया? हो गया. Now this is for the today.
दिस इज फॉर द टुडे. देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस आई कैन आस्क यू, बट ठीक है, आज रहने देते हैं बिकॉज दिस इज अ 3 क्वेश्चन सीरीज. सो टुमारो अगेन वी विल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं. एंड प्लीज ट्राई टू लाइक, सब्सक्राइब, because this is what important for me to expand my work, to spread my work. And also my team has insisted me, and I also want that you should try to spread if you really like these videos, small videos. Okay, so please try to share. I will be really happy, I will be really thankful to you. Thank you so much.